Good afternoon, everyone. Welcome once again to this expiry series. So today we have MCX Silver Mini options expiry. Myself Durgesh Ugawekar, commodity research analyst. So today we are going to see how the silver mini prices are reacting. Yesterday US markets were closed and today prices have opened a little lower. सो आज ऑप्शंस का एक्सपायरी है, हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम ट्रेड्स क्या ले सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग साइड में हम लोग क्या देख सकते हैं. सो आई जस्ट क्विकली शेयर द स्क्रीन. ओके, सो दिस इज द सिल्वर मिनी फ्यूचर्स चार्ट. ये सिल्वर मिनी का फ्यूचर्स का चार्ट है. हम लोग क्विकली देखेंगे. ये 15 मिनट का चार्ट है. बिफोर दैट वी विल एनालाइज यस्टरडे क्या हुआ था. यस्टरडे मार्केट्स वर क्लोज. यूएस मार्केट्स वर क्लोज, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं था. वी हैव सीन sideways movement since last few days in gold and silver. Silver and gold are reacting to the global news. Last बहुत दिनों से पूरा commodity market is totally reacting to the global news only. So आज expiry specific we will see if we can take any trade. So this is the 15 minutes intraday chart of silver mini futures. So अभी 2,75,694 चल रहा है. अभी ये just move आया है. It was trading near about 276,106 just before we started this session. So ये आज के लिए लेवल्स क्या रहेंगे. 2,75,000 इमीडिएट सपोर्ट है एंड ये जो ट्रेंड लाइन है इसके वो ब्रेक करने के बाद ओनली वी विल टेक द बाय ट्रेड. सो ऊपर के साइड में 2,76,500 काइंड ऑफ लेवल्स we will be marking. So 2,76,500 के ऊपर ही हम लोग बाय साइड का ट्रेड लेंगे. एंड अगर आज का लो ब्रेक होता है 2,75,200 के आसपास, देन वी विल गो फॉर द सेल ट्रेड. सो फॉर दैट आई विल आस्क एवरीवन टू कीप ऑप्शंस ऑन रडार. 2,75,000 का पुट हम लोग रडार पे रखेंगे एंड इफ प्राइस गोज ऑन द हायर साइड 2,77,000 का कॉल हम लोग रडार पे रखेंगे. So before we take any momentum trade, if we look at the options data, अगर आप MCX के साइट पे जाके देखोगे तो 2,90,000 के कॉल्स में सबसे ज्यादा OI है ऑन द कॉल साइड एंड 2,70,000 के पुट्स में सबसे ज्यादा OI है ऑन द पुट साइड. सो ये बड़ा रेंज रहेगा आज के लिए 2,70,000 से 2,90,000 का. In the evening, if there's any news on the data front or any announcement from Trump or any other official regarding the US, Iran or the conflict that is going on, तो उसके चलते अगर कोई न्यूज आता है तो हमें एक बड़ा मूव देखने के चांसेस है. बट एज ऑफ नाउ इंट्राडे के लिए 2,75,200 के नीचे हम लोग सेल करेंगे एंड 2,76,500 के आसपास उसके ऊपर अगर जाता है ट्रेंड लाइन के ऊपर देन ओनली वी विल बाय. सो उसके लिए 275 का पुट रहेगा रडार पे एंड 277 का कॉल रहेगा रडार पे. सो दोज ऑफ यू डोंट नो कि सिल्वर मिनी का ऑप्शंस का लॉट साइज इज 5. So whatever the premium is there into 5, that will be the premium that you will be paying to buy this option. So let's see if in next 10 or 15 minutes we are able to break on either side. अगर either side में कोई breakout आता है then we will try to push this trade. Meanwhile other commodities, if we look at gold भी अगर हम लोग देखते हैं तो spot gold 4530 चल रहा है अभी. On MCX gold mini contracts are trading at 157,500. Gold mini contract का expiry on Friday रहेगा. As of now today we have silver mini options expiry. So overall अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो ये ओवरऑल नीचे के साइड जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आज, बिकॉज वी हैव सीन फ्रॉम द मॉर्निंग देयर वेर कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स एंड प्राइस गॉट स्टॉप्ड ओवर हियर. यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है बट स्टिल एक जो मोमेंटम ऑनगोइंग मोमेंटम आना चाहिए जो रिवर्सल के लिए वो आया नहीं अभी तक. सो आई होप कि ये 275 का लेवल ब्रेक कर देगा आज के लिए एंड देन वी विल बी एबल टू सी अ शार्प फॉल बिलो 2,75,000. अगर 2,75,000 के नीचे जाते हैं प्राइजेस, दिस इज द लॉन्गर पिक्चर. अगर हम लोग देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है लॉन्गर पिक्चर. इसके नीचे अगर प्राइस जाते हैं तो हमें 2 से 3,000 रुपए का फॉल देखने मिल सकता है आज के दिन में. सो 2 to 3,000 फॉल्स इज मोर देन इनफ फॉर एन एक्सपायरी डे. 2 to 3,000 पॉइंट्स का मूव अगर आता है आज के दिन तो इट्स मोर देन इनफ.
एंड इफ ऑन द अपसाइड अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता या यहाँ पे टच करके वहाँ ऊपर प्राइजेस अगेन स्टार्ट गोइंग अप, देन 276,500 के ऊपर हमें प्राइजेस देखने मिलेंगे कि 2,79,000 2,80,000 तक जा सकते हैं. सो 277 का कॉल 1,000 रुपए चल रहा है 1050, एंड 275 का पुट चल रहा है 1350. तो ये दोनों हमारे रडार पे रहेंगे. इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए आज कंबाइंड प्रीमियम अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कम प्रीमियम है सेल करने के लिए, बिकॉज 290 का कॉल है विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड 55, एंड 270 का पुट है विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड 202. सो कंबाइंड प्रीमियम इज हार्डली 250 rupees. So if anyone wants to go for option selling, can do 290 का call and 270 का put. ये combined प्रीमियम रहेगा. 250 का ये आप सेल कर सकते हो और 500 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो इसमें. So as of now there is no clear direction yet, so we will wait for the breakout on either side. If you all know, we always wait for the confirmation. Last session was of natural gas. We had marked some levels जिसके नीचे जाएगा तो नेचुरल गैस नीचे जा सकता है. सो दैट्स व्हाट हैपेंड आफ्टर द सेशन. नेचुरल गैस वेंट बिलो 287 एंड उसके नीचे प्राइजेस शार्प फॉल देखने मिला था. सेम इन द क्रूड ऑयल सेशन वी डिड. So we will wait for the confirmation of breakout on either side of the move. Still we are at 275 700. Meanwhile, if we look at crude oil का चार्ट अगर हम देखते हैं तो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 8780. सो इन द लास्ट वीक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस कि मैंने वीकली चार्ट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द वीकली चार्ट. वीकली चार्ट में बहुत सारे बेरिश रिवर्सल कैंडल्स है जो ये लेवल क्रॉस जब तक नहीं होता तब तक वी हैड सेड कि क्रूड ऑयल के चांसेस है कि नीचे आ सकता है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. अगेन देयर इज अ बेरिश रिवर्सल on the weekly chart. Last week it has engulfed the previous bullish candle. So and we have seen a gap down. तो ये जो गैप डाउन है ये वीक का ये कंटिन्यू हो सकता है. एंड वी हैड डिस्कस कि 9,150 का लेवल था, उसके नीचे प्राइजेस बहुत शार्प फॉल देखने मिल सकता है. तो ये शार्प फॉल अभी कंटिन्यू हो सकता है. So if anyone is trading in crude oil can look for sell on rise kind of trades. इंट्राडे के लिए तो मैं अभी कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज इट्स टू वोलेटाइल. सो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ट्रेड्स में आप बने रहिए. 9,400 का एक लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता 9,400, तब तक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ट्रेड्स में रहना बेहतर रहेगा. ऑन द डाउन साइड यू कैन एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 8,000 7,800 ऑन MCX crude oil. Let's come back to the silver mini chart, intraday chart, 15 minutes. See, I said कि 275 का सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे प्राइस अभी भी नहीं जा रहे, बट विल वेट फॉर सम टाइम. अगर 275 के नीचे जाते हैं देन वी विल टेक द ऑप्शंस ट्रेड. Meanwhile, if we look at other commodities, last time we had discussed about zinc. So zinc is still performing. अगर हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं so this week it's marginally up by around 0.20%. Last week it was up by more than almost 2%. So this is increasing on the weekly basis. तो ये प्राइस वीकली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्म हो रहे हैं. सो इसमें आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो. इफ एनीवन वांट्स टू ट्रेड इन बेस मेटल्स ऑन द पोजिशनल साइड कैन गो फॉर जिंक. In the base metals pack, this looks very promising. On the upside 380 390 के levels हमें देखने मिल सकते हैं in coming few weeks. Still silver is not breaking on either side. But अभी क्या हो रहा है कि नीचे से प्राइजेस ऊपर आए हैं, so it is finding the support. If we see any breakout out of this trend line, we will go for the buy trade. Let's wait for some time. So as we have been discussing since last 2 or 3 these expiry sessions ki largely now commodity market is driven by the news that's coming out of the conflict that's going on between US and Iran. So
आज के लिए भी ऐसे ही रहेगा। अगर इवनिंग में कुछ न्यूज आता है, यू ऑल नो कि इवनिंग सेशंस आर वेरी वोलेटाइल फॉर कमोडिटीज मार्केट एज यूएस मार्केट्स ओपन एट अराउंड 7 o'clock। सो इवनिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप वो टाइम पे इसको ट्रैक करना। अगर 275 के नीचे है प्राइजेस, देन वी आर लाइकली टू सी अ फॉल टुवर्ड्स अराउंड 272 और 270 काइंड ऑफ लेवल्स। 270 के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओआई ओवर देयर ऑन द पुट साइड। सो 270 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा। Let's see if we try to break on either side. So 275 600 चल रहा है अभी। लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस 15 मिनट्स कैंडल। अगर ये 15 मिनट्स कैंडल कहीं ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड और ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड क्लोज होता है, देन वी विल बी एबल टू टेक द ट्रेड। But overall, the momentum is likely to stay bearish as long as price 276,500 to 77,000 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है. So if you are willing to take any trade, go for the put side for especially for the expiry. I'm not suggesting any positional trade in silver, but especially for expiry day, if you want to catch any momentum, so it's likely to go on the lower side. So आप put side में बने रहना. एंड ओनली अबाउट 276 500 काइंड ऑफ लेवल्स आप कॉल साइड में एंट्री कर सकते हो. So silver has been moving very volatile these days. So everyone, if you are looking at the silver prices since last few months, since this war situation has happened, so दिन में almost 7 से 8 हजार पॉइंट का मूव ऊपर से नीचे तक हो जाता है. Once it goes up in the morning, again goes down in the evening, again it tries to cover up. So ये 7 से 8 हजार का एवरेज मूवमेंट हो रहा है अभी सिल्वर में. So on the expiry day, if we get to catch minimum 2000 points or so, it's more than enough. So that's why we have marked these levels 276 500 के ऊपर. We are expecting कि ये एक jump लेगा towards 278 279 kind of level. So that will be the best trade to take about 276 500. And 275 के नीचे it's likely to go towards 273 272. So that will be the best trade to take on the put side. Still, there is no move. 2 minutes left for the closing of this candle. We'll wait for two more minutes, and then we'll decide what to do next in silver mini options. Meanwhile, other commodities are also sideways as of now. Gold is trying to recover from the lows, from the intraday lows. So आज के लिए ऑप्शंस दो रडार पे जो रखने बोले हैं, दैट इज 275 पुट एंड 277 का कॉल. So 2,75,000 का पुट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1300 एंड 277 का कॉल जो है दैट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1050. So like I said कि मोमेंटम ऑन द डाउन साइड रहने के ज्यादा चांसेस है. सो आई वुड से कि अगर 275 ब्रेक होता है, देन मोर कन्विंसिंगली यू कैन बेट ऑन पुट्स टुडे. सो 275 के पुट्स पे आप बेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट. ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट आल्सो. Still there's no move on either side.
So this 15 minutes candle has closed. Let's wait for 5 more minutes if we can take any trade. Option sellers, I would suggest 270 ka put and 290 ka call. You can sell. The combined premium was at around 250 when we discussed. Now it's at around yeah, it's same 250 only. So as we progress towards the expiry and price remains at the same level, this premium is likely to drop to zero in the evening session. So अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ये दोनों कॉल और पुट पे ध्यान रखना, इसमें आप सेलिंग कर सकते हो. Overall if we look at the higher time frame on silver, so higher time frame में अभी भी chances है कि silver एक jump ले सकता है towards 285 290 kind of levels, but first it has to create some base. It is now trading at an important support. So जैसे मैंने बताया ये 275 का important support है. अगर ये 275 break होता है then we might go lower towards 272 270 kind of levels for positionally. बट इंट्राडे में हमें अभी सिर्फ एक्सपायरी पे फोकस करना है. सो लेट्स फोकस ऑन द ऑप्शंस दैट वी आर टारगेटिंग, दैट्स 277 कॉल एंड 275 पुट. सो मोर और लेस ये दिस इज शोइंग अस दैट इट्स नॉट गोना गो अप. ये हम कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स बना रहा है. सो जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक होता है वी विल ट्राई टू टेक दिस ट्रेड. 275 380 का लो है आई गेस. So 275 380 के नीचे अगर जाते हैं प्राइजेस, आई वुड आस्क एवरीवन टू बाय 275,000 का पुट, 2,75,000 का पुट which is trading at around 1340 rupees, 1340. Crude is also not moving much for intraday. 8790 चल रहा है. But overall the trend looks likely to go lower. So that's why I would suggest कि crude oil, if you are trading crude oil, keep your positions on sell on rise kind of situations. Okay, so silver mini is trying to go down. 275 438 आ गया है. Our stop loss will be this 276 500 only. 276 300 or 400 you can keep on the future side. जब तक 1,000 रुपया ऊपर नहीं जा रहा है you can keep your put positions open. So let's wait. ये कैंडल का लो ब्रेक होता है वैसे ही we will buy the put. On the base metals, if someone has joined recently, base metals, if you look at zinc looks more promising. So आप zinc buy कर सकते हो. 370.80 का रेट चल रहा है उसमें. And if you look at the weekly chart, it's likely to go much higher towards 390 or 400 kind of levels in coming few weeks or so. Still we are at the same level in silver mini futures. But जैसे मैंने बताया कि more or less it's likely to go down. So we will go for the put. 275 का put चल रहा है now at 1380. I will ask everyone to buy this put. And your stop loss will be 1,000 points on the higher side on the futures. So जब तक 276 400 break नहीं होता on the higher side, you can buy this put only for the expiry trade. So 1370 वगैरह चल रहा था, 1392 now. So you can buy this put into इसका जो lot size है that is 5. If we are able to break below 275 today, then it's likely that this future price will fall towards 272 kind of levels, 2,72,000. तो अगर 3,000 रुपए का फॉल आता है तो ये जो 275 का जो पुट है that can go up to 3,000, 2,500 3,000 kind of levels. So
So as long as 276 400 break nahi ho raha, we will wait. We have entered at 1360 1370 kind of levels. Other commodities not moving, but crude also you can stay on the put side. Silver again has gone sideways, not going much below the support level. Let's wait for few more minutes. 275 400 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 275 का सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा. Again, we will be ending the session in next 5 or 10 minutes, but what I would suggest कि अगर 276 500 के ऊपर जाता है prices and it sustains for 15 minutes in the evening or after ending this session, so I would suggest you to go for 277 call, because उसके ऊपर जाने के बाद 2 से 3000 का मूव आपको कैच करने मिल सकता है. So I would suggest कि you exit from the put positions once it crosses about 276 500 and go for the call side. $275 $499. So today we saw two trades to silver mini का put जो हमने suggest किया अभी, and if it goes higher you have to square off your position, you have to book the loss and then go for the reverse trade on the 277 call, because you should not miss the move on the higher side too. अगर शाम को मूवमेंट ऑन द हायर साइड आता है तो मूव मिस नहीं होना चाहिए. Gold is also very steady now. 275 का पुट हम लोगों ने बाय किया 1360 पे, 1300 चल रहा है अभी, एंड फ्यूचर प्राइस इज मोर और लेस सेम, ओनली 275 570. So once again, option sellers, if any option seller is there, they can go for 290 calls and 270 puts for the selling, एंड ऑप्शन बायर्स जो है वो 275 का पुट एंड 277 के कॉल पे आप फोकस कीजिए. नाउ वी हैव सजेस्टेड टू बाय 275 का पुट व्हिच वाज ट्रेडिंग एट 1360, नाउ इट्स 1328 काइंड ऑफ लेवल्स. तो ये बाय करना है आपको, एंड जब तक फ्यूचर का प्राइस 276 400 क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक आपको ये ऑप्शन होल्ड करना है. एंड आज अगर 275 का लेवल ब्रेक होता है आफ्टर वी एंड दिस सेशन, then it's likely to fall by 2 to 3,000 rupees on the lower side. And अगर 276 500 on the higher side break होता है, I'm just marking the levels for the expiry traders. So 276 500 का level अगर break होता है, you have to enter the 277 call which is currently at 1060, but उसका प्राइस बाद में बढ़ जाएगा, 1100 तक जा सकता है, ये 1100 1300 तक जा सकता है अगर इसके ऊपर प्राइजेस जाते हैं, तो तभी आपको बाय करना है, अभी नहीं करना है. Now we are into the put side trade. We'll wait for 2 more minutes if price is reacting as per our setup or not. Other trades that we suggested are positional zinc you can buy. We have an official call also for zinc June futures, which are currently trading at around 370.85. So this was the exact level that we recommended to buy at around 370.70. 366 would be the stop loss and 380 would be the target for next few days. So zinc looks more promising than other base metals, so that's why we are bullish for next few days on zinc.
Still we are not able to see any momentum, trading sideways only. Okay, so we have already marked the levels and have given you all the levels to trade throughout the expiry, and also I have suggested the option strategy which you can trade for the expiry. जैसे as we approach towards the expiry, you all know out of the money options go to zero. So 290 ka call and 270 ka put we have uh, suggested to sell. सो एज पर द सेटअप दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, बट वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द पुट साइड. सो आई जस्ट गिव यू द स्टॉप लॉस 276 400 के ऊपर जब तक नहीं जा रहा है आपको ये ऑप्शन होल्ड करना है, जो भी 1237 चल रहा है. 1360 पे हमने बाय किया इसको, एंड आपको वेट करना है टिल इवनिंग. अगर 276 500 ब्रेक होता है देन यू हैव टू बाय a call option on of 2,77,000, which is now trading at 1,060, which will go up to 1,300 if 276 500 क्रॉस होता है तो. So these are the levels for the day. We were not able to catch momentum between this live session, but hopefully on Friday we have gold mini expiry. Hopefully we will be able to catch a good momentum throughout the live session. Of course, I have marked the levels. I would ask everyone to trade accordingly and not to bet more than 2% of your capital on a single trade. So that is also very important to follow the risk management, not to bet Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.